The air quality in Delhi NCR is dipping and it's become a choke point for the residents in the city. Now, Delhi's air quality continues to spiral out of control with the air quality index recorded at Hazardous 494 today. Now, according to the Central Pollution Control Board's Samir app, this places the Delhi NCR in a very serious category as the AQI hits a record. Now, residents are choking on the thick, toxic air with reduced visibility and serious health risks on the horizon. The national capital braces for more health complications as pollution levels show no signs of easing, leaving citizens suffocating and vulnerable to respiratory issues. Now, in some areas, including Anand Vihar, Ashok Vihar and Jahangirpuri, the AQI has hit the 500 mark, the highest on the scale. Now, other areas like Munka, Rohini and DU North campus also recorded 500, choking residents with dangerous air pollution levels. Neighbouring cities are faring no better. Ghaziabad's AQI stands at around 472. Gurugram at 440 and Noida at 434, making the air unsafe across the national capital region. Now, the toxic air is being compared to smoking 21 cigarettes a day, posing severe health risk. The worsening air pollution fueled by stubble burning and unfavorable weather conditions has prompted the Delhi government to declare the situation a medical emergency. Meanwhile, educational institutions are taking precautionary measures. Delhi University and Jawaharlal Nehru University has shifted classes online until November 23rd and 22nd respectively. Physical classes for class 10 and 12 in Delhi schools will also move online starting tomorrow as ordered by Chief Minister Atishi. Now, the Supreme Court has stepped in directing all Delhi-NCR states to strictly enforce Stage 4 of the Graded Response Action Plan. Now, the court criticized the Commission for Air Quality Management for delays in implementing the GRAP, calling their approach wrong. Now, as a dense smog continues to choke the national capital region for the 7th day, the Union Health Secretary has issued an updated advisory to states stressing immediate preventive measures to safeguard public health. We are in fact joined by Shalini Bajpai, who in fact has been giving us the kind of situation that's there in Delhi and in the NCR region. Shalini Bajpai, how is the situation outside your area where you're standing right now? बिल्कुल, मैं अगर आप बात करूं आज के दिल्ली की तो आज 484 है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है और जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। और मैं जहां पर हूं मंडी हाउस पर, यहां के हालात भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह की एक कहेंगे कि धुंध है, स्मॉग है दिल्ली के चारों तरफ छाया हुआ है। और चूँकि इस स्मॉग की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं और फिजिकल मोड में कहीं कोई क्लास नहीं चल रही है। और ऑफिसेस के जो टाइमिंग्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं उनके भी टाइमिंग चेंज की, चाहे एमसीडी का ऑफिस हो या फिर दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिस हो, सबकी टाइमिंग चेंज की गई है ताकि लोग एक साथ एक सड़कों पर ना निकल पाएँ, क्योंकि गाड़ियों का जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन बढ़ जाता है गाड़ियों का। इसमें इसीलिए लगातार ग्रैब 3 में भी इस बात को बोला गया था कि आप जहां तक हो सके जो पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी लेकर जहां तक हो सके रोड पर ना जाएं, क्योंकि एक एक गाड़ी अगर कम होगी तो शायद एक बड़ा हिस्सा जो कहेंगे पोल्यूशन जो है जो काफ़ी कुछ कम हो सकेगा। इसलिए ग्रैब 3 में ही ये बात बोली गई थी, लेकिन ग्रैब 4 में भी अब जो सख्ती से लागू करने की बात हो रही है कि ग्रैब 4 को जो भी उसमें पॉइंट्स हैं उसको अगर सख्ती से लागू किया जाए तो शायद कुछ सुधार हो सके। क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं, कल सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 2 दिन से 450 अबव जा चुका है। इस वजह से ग्रैब 4 लागू करना पड़ा और ग्रैब 4 के इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद
अभी बहुत सी जगहों पर हैं जहां पर आपको सख्ती नहीं दिखेगी। रोड पर जिस तरह की स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, जिस तरह का ट्रैफिक पुलिस अलग अलग चेक पॉइंट्स जो बने हुए हैं वहां पर पहुंचकर गाड़ियों को चेक करे, तो वो अभी उतनी तस्वीर नहीं दिख रही है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, चेक कर रही है, लोगों के कागज चेक कर रही है, और उसके अलावा BS3 BS4 जो गाड़ियां हैं जो कि लेकर नहीं जानी है, दिल्ली में जिनकी एंट्री नहीं करनी है, वो उसको लेकर रोका जा रहा है कुछ ही पॉइंट पर। लेकिन उस जगहों पर भी सख्ती से चेकिंग करने की ज़रूरत है ताकि लोग BS3 BS4 की गाड़ियां लेकर ना जाएं। जहां ट्रकों को लेकर जो बात हुई थी कि हैवी जो गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल्स जो हैं, जो कि सामान ढोने के काम आते हैं, ट्रक हैं बड़े, उनको लिए भी कहा गया था कि वो सिर्फ CNG और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वही आ सकेंगे, बाकी EV जो व्हीकल होते हैं वही आ सकेंगे। बाकी कोई भी जो बड़े वाहन हैं, जो अगर वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं लगे हुए हैं, तो वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो ये सारा चेक होना था, इन लोगों को रोकना था दिल्ली के अंदर आने से, जो पॉइंट्स उसमें बताए गए। लेकिन सख्ती किस तरह की है वो हम अलग अलग जगहों पर जाकर। शालिनी, हर साल हम ग्रैब की बात करते हैं, हम उसका रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, मगर क्या इफेक्ट है, असर है इस ग्रैब इम्प्लीमेंटेशन से? बिल्कुल नहीं पड़ा। शायद पड़ा होता तो ग्रैब 4 तक हम नहीं आते। जो कि अभी फ़िलहाल जो फीडबैक जो मिल रहा है लोगों का, तो वो स्थिति यही है कि ग्रैब 4 तक हम तभी पहुँचे क्योंकि ग्रैब 1 का कोई असर नहीं हुआ। फिर ग्रैब 2 लाना पड़ा, ग्रैब 2 का भी कोई असर नहीं हुआ, फिर ग्रैब 3 और उसके बाद ग्रैब 4। तो हमें चूँकि ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक होता है, ये बात अथॉरिटीज़ भी जानते हैं कि ये स्थिति बनेगी। नवंबर में लगभग यही हालात होते हैं, हर साल होते हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। अथॉरिटीज़ इस बात को जानते हैं कि पोल्यूशन लेवल कहाँ तक जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ तक पहुँचता है, ये उनको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी ये हर साल क्यों होता है, ये बड़े सवाल जरूर खड़े करता है कि इतनी सारी राजधानी जैसी जगह पर, हालांकि पोल्यूशन तो स्थिति अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया की इस दौरान बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन उसमें भी सबसे खराब स्थिति जो है वो है दिल्ली की। सबसे बुरी स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली चूँकि राजधानी है, उसके बावजूद यहाँ पर तमाम बातें होने के बावजूद, तमाम मीटिंग्स होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है और जो CAQM भी जो है वो भी बोल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आखिर क्या है कि जो असर नहीं दिखता है, कोई भी असर। हर साल वही की स्थिति, हम वहीं पर क्यों पहुंच जाते हैं, क्यों सब कुछ कहने के बावजूद कुछ भी नहीं होता है। Well, thank you, Shanli, for in fact joining us with all those details, especially on how we've reached GRAP 4. Despite all the GRAP, restrictions in place, now we have reached GRAP 4 levels because of the severe degrading of the quality of air that we are breathing in the Delhi-NCR region. Meanwhile, Delhi's air quality remains heavily impacted by stubble burning in northern India and in Pakistan. Now, while reports suggest a decline in the number of stubble fires this year, experts believe that farmers may be altering their burning patterns to avoid detection by satellites. Now, NASA scientist Hiren Jetwa has raised concerns, noting that fire activity seems to be shifting to late afternoon after key satellite overpasses. Now, satellites like NASA's Aqua and Suomi NPP pass over the region between 1:30 to 2 p.m. IST, but it appears that farmers may be timing their burns to happen after these satellites have passed. So, data from the South Korea's GeoComSat-2A satellite, which offers continuous monitoring, supports this claim. Now, although Punjab has recorded over 8,400 fires this year, down from 33,000 in 2023, the levels of aerosol pollution which contribute to poor air quality remains largely unchanged. Now, this discrepancy raises concerns about the true extent of the burning. Experts suggest a more accurate method of monitoring, such as measuring the total burnt area, may provide a clearer picture. While some regions like Punjab and Haryana have been reductions in stubble burning, neighboring states like Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Delhi are experiencing an increase in farm fires. Now, local officials have rejected claims that farmers are avoiding satellite detection. The Punjab Pollution Board insists that data from both ISRO and NASA satellites
including those detecting nighttime fires, capture all incidents accurately. However, the key question remains, is there a real decrease in stubble burning, or are farmers simply becoming more strategic in how and when they burn their stubbles? Many farmers argue that they have little choice, claiming they receive minimal support from the government to address the issue. Earlier, my colleague Nivriti Mohan had talked to farmers on the ground, detailing problems they face relating to stubble burning. Many farmers may say that they have little to no choice but to burn stubble. Finding out why this is so, Nivriti gets you more. We are at a village called Guda in Karnal, and right now we are at a vast field here, and in this farm you can see that the stubble has been cut and it is collected in the field to be burnt because nobody collects it from here. So this village, almost everybody, they are saying, I have some villagers and farmers with me who are saying that they are forced to burn it because nobody collects it from here, and there is something lacking in the system of the government. That is why they are forced to burn all the stubble. Let us talk to them. Sir, आगे आ जाइए. आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमेर सिंह है जी. सुमेर सिंह जी, आपका गांव में मतलब जलाना मजबूरी है? मजबूरी है मैडम, यहाँ कोई मशीन नहीं है. 2-2, 3-3 एकड़ के जमींदार है, 1 एकड़ का, आधा एकड़ का है. वहाँ ना मशीन आती. कोई 20-30 एकड़ वाले के पास मशीन आती है, वो भी नहीं है यहाँ गांव के अंदर. तो जो सरकार बोलती है कि हम किसानों को जा के बोल रहे हैं कि भाई कोई फैसिलिटी आप नहीं है. इकट्ठा करो, ये करो, जलाओ मत. कोई फैसिलिटी नहीं है मैडम, गांव तक कोई नहीं आता जी. यहाँ तक कोई नहीं आता. कोई नहीं. एक वो मशीन होती है ना सर, जिससे इसको इकट्ठा करते हैं, फिर इसके बंडल बनाते हैं, वो है आपके पास? हमारे पास नहीं है जी, बाहर है, कहीं होगी. हमारे को जब जरूरत पड़ा तो मिलती नहीं टाइम पे. अच्छा, इस गांव में वो कहीं पे भी नहीं है? किसी के पास नहीं. गांव में एक किसान के पास भी नहीं, गांव में किसी किसान पे नहीं. अच्छा. बाहर किसी पे हो, वो हमने जरूरत पड़ा तो मिलती नहीं टाइम पे. अच्छा, तो फिर मजबूरी में क्या करे जी. तो गांव में जलाना ही पड़ता है, और कोई चारा नहीं है सर? कोई चारा नहीं इसके बारे में. Now, severe air pollution poses a serious threat to children, especially those aged 1 to 5 years, as their developing lungs and immune systems make them highly vulnerable. Experts warn of both immediate and long-term health consequences. Pulmonologists say that air pollution can permanently reduce lung capacity in children by 10 to 15%. Exposure during childhood may also lead to structural airways changes and chronic respiratory conditions in adulthood. Fine particulate matter like PM2.5 penetrates deep into the lungs, potentially entering the bloodstream and affecting other organs. Children in high pollution areas often show smaller lung sizes, higher risk of asthma and recurrent respiratory infections. Now, prenatal exposure to air pollution can pose serious risks to fetal development, including low birth weight, premature birth and developmental challenges. For children with pre-existing health conditions, regular monitoring, spirometry tests and a detailed healthcare plan are vital. There are risks to children as well, as the air quality in the national capital and its surrounding areas are become bad. It has been said that children face the risk of changed lung capacity, as well as it could in fact affect their other organs as well. It could lead to what pulmonologists say, problems with regard to breathing and also asthmatic conditions as well.